Okay, so today we are going to discuss some problems related with the register and counter. Okay. So let me share the whiteboard. So in the last class, we are going through the questions of multiplexer, the questions which are asked in GATE. Actually, today I forgot to take that book of multiplexer. So today we are going to see some questions of register and counter. Okay. So is it okay? Are you okay with that? Yes, sir. Okay. So let us see one question. It is not very difficult, but you should have basics of registers. So are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. So here is one question which is related with register. Okay. So here you can see that here there is a register which consists of 8-bit storage capacity, and it is connected with so which gate is this? Which gate is this? ये कौन सा गेट है? ये वाला? Anybody knows? NAND gate, sir. Okay, so yes, which gate is this? ये जो मैंने गेट ड्रॉ किया यहाँ पर, ये कौन सा गेट है? किसी ने कहा NAND गेट है. Is it a NAND gate? What is the symbol of NAND gate? ये कौन से गेट का सिंबल है? ये कौन से गेट का सिंबल है? So firstly, all of you should remember the symbols of all the gates. Okay. Otherwise, it will be difficult for you. So, symbol of NAND gate. So, which gate is this one? Sir, and gate. AND gate. Which gate is this one? Not gate. Gate. This is a NOT gate. ये कौन सा गेट है? OR gate. Yes, this is not. This is AND. This is NAND. I have already written it. This is OR. Next. Which gate is this? XOR gate. Or this is XOR. One more. Which gate is this? XOR. XNOR. Okay. So in this question, there is a register. Okay.
where there are two inputs of the register. The first one is the clock and the second one is the serial in, and initial contents of this register is given as 0, 1, 1, 0. Okay, so the question is, as the initial contents are given in this serial in parallel out shift register, so this is a shift right register. Okay, so this is a shift right register. Shift right register. Okay. So what you have to tell here, the question is, where is that? Okay. So the question is, what will be the contents? What will be the contents of register after 3 clock pulses? Okay. So what we have to tell? We have to tell the contents of these registers. So here you can see that it is a 4-bit serial in parallel out shift register. So yes, obviously it is a shift right or right shift register. So we have to tell what is the contents, what will be the contents of this register after 3 clock pulses. So initially what the contents are, initially the contents are 0, 1, 1, 0. Okay, so here we can write it as clock. Here 0th clock. Okay, so what are the contents in the first clock? What are the contents in the first clock? Okay, so this is the register content 0110 initially. So what are the contents in the first clock? Can you tell me? So let me write the name of the contents as you can. This is a 4-bit shift register, so obviously it will require 4 flip-flops. So I am writing it as F1, F2, F3, and F4. Okay, so here I am writing F1, F2, F3, and F4. Okay, now one by one, please tell me what will be the content of register F1. So for telling the output of this particular shift register, firstly you should know the truth table of XOR flip-flop. So all of you knows the truth table of XOR flip-flop. So if A and B are 2 inputs, so Y output will be what? A XOR B operation, A B bar plus A bar B. This is the XOR operation, or it can be written as Y is equal to A XOR B. Okay, so for this combination A and B are 0, 0. Okay, let me change the color. So it is 0, 0. It may be 0, 1. It may be 1, 0, or it may be 1, 1. So for these particular combinations, the output Y is what? The output Y is 0 for this case, 1 for this case, 1 for this case, and 0 for this case. So how you will get all these outputs? So when you will put the values of A and B here, so as you can see that A and B both are 0, 0. So when you will put the values of A and B in the expression of Y, so let us put only one value and all other values you will put. So I am putting the values of A and B as 0, 0. So what the expression we have? We have A B bar plus A bar B. So you can see that A is 0, B is 0, so 0 bar plus A 0, so A bar, and B is also 0. So what you already know that here complement will become 1 plus complement will become 1 dot 0. So what will be the result? 0. Yes, obviously. So here 0 and 1 is 0 plus 1 and 0. 0. Okay, so 0 plus 0 is 0. So 0. first case. Okay,
So similarly, you can find out all these values for the values of A and B, put the values of A and B in this expression and find out the values. So in this case, you will see that when, so what the conclusion you can get from this truth table? When both inputs are different, output will be 1, sir. Yes, sir. Okay, very good. When input 1. Yes. So 0, 1. Yes. one more thing I want to show you that when we will have A and B, A, B, and C, 3 variables are there. So there will be the combinations as 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, and it is then 1, 0, 0, then 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. So if we have 3 variables, then in that case, if we want to find out the XOR of A, B, and C, okay, what I want to do, I want the XOR of A, XOR B, XOR C. So what will be the output? Okay. So can anybody tell me the what should be the outputs? So what will the first output? First output will be 0. No. The second output will be 1. 1. Third one is 1. what about fourth one? No, sir. Huh? No. 0, sir. 0. Okay. Next one. 0, sir. Okay. So Oh, how, no, 1, sir. okay. So how you will find that? How you will find that? Okay. So as we already you can see that in the case of 2 variable, अगर इन 2 variables को हम देखें, 1 0 को देखें, ठीक है, तो इस 1 0 के लिए वैल्यू क्या आएगा? 1. 1, sir. और उस 1 का फिर 0 के साथ एक्सओर करेंगे तो क्या आएगा? 1 0. तो 1 0 के लिए क्या आएगा? 1 ही आएगा. You can see in that way. In the next case, take the XOR of 1 0. What will be the output? 1. इसके लिए 1 आएगा और फिर से ये 1 और इस XOR करेंगे तो क्या होगा? 0. 0 आएगा. Okay, so you can understand in this way. For 0, sir. yes, 0. also it should be 0. And Yes, sir. what should be the last case? 1 आएगा. 1, 0 sir. नहीं sir. 0, 0, 0. 1, sir. 0 1 आएगा. आएगा. 1 होगा सर. Okay, so some of you are telling 1 and some of you are telling 0. So how you can Yes, sir. find that? So for 1 1 what will be the output? 0. 0, sir. 0 or 0 or 1. When you will do the XOR of 0 and 1, so what will be the output? 1, So 1 आएगा. 1. आएगा. Okay, so कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Now, Okay, sir. now what you can conclude from this, from these output? आपने यहाँ तो कह दिया कि यहाँ पर कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1 आ गया. Now what you can conclude from this truth table? So when any of the input will be 1, then output will be 1, sir. Any of the input will be 1. So यहाँ पर इस वाले केस में कोई भी एक इनपुट अगर 1 है और बाकी 0 है तो हम लोग को आउटपुट 1 मिलेगा. नहीं, तो यहाँ पर इस वाले केस यहाँ पर 2 ठो 1 आउटपुट है. यस सर. यहाँ पर भी तो 1 है लेकिन यहाँ तो आउटपुट 0 है. ओनली इन द केस अगर 1 है तो. यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी क्या देख रहे हो? यहाँ भी तो 1 और 1 है लेकिन यहाँ भी तो 0 है. इस वाले केस में भी 2 1 है लेकिन यहाँ 0 है. तो व्हाट यू कैन कंक्लूड? 1 कब हो रहा है? ध्यान से देखो 1 कब हो रहा है? जब सिर्फ एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट 1 है सर. जो सिंगल इनपुट हाई है सर तभी हो रहा है. लास्ट वाले केस में? नो सर, लास्ट वाले केस में तीनों में इनपुट हाई. तो फिर अभी तो नो सर. when odd number of inputs are high, then output is high. Is it okay? Yes, sir.
मैंने क्या कहा? An odd number of inputs are high, then output is high. हाँ, मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट, जैसे यहाँ पर आप इस केस में देखो, यहाँ पर एक ही इनपुट आई है, मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है। इस वाले केस में ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है, इसलिए आउटपुट हाई है। इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में, ओके लेट मी चेंज द कलर। इन दिस केस ब्लू कलर, यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर दो इनपुट्स हाई है, दो इनपुट हाई है, मतलब इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई है, तो इसमें क्या हो गया? आउटपुट 0 हो गया। तो जब भी इवन, यहाँ पर 3 वेरिएबल के अलावा यहाँ पर 5 वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, 20 वेरिएबल भी हो, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हाई होगा तो आउटपुट विल बी 0। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई। ओके, सो इसीलिए एक्सऑर गेट को हम लोग ऑड गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सऑर गेट को ऑड गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास एक एक्सऑर गेट है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव एन एक्सऑर गेट। सो फॉर दिस एक्सऑर गेट द आउटपुट विल बी 1 only when one of the inputs will be high. Okay, so for the first case, फर्स्ट क्लॉक पीरियड में अगर देखेंगे तो F1 का वैल्यू क्या होगा? F1 का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? F1 का वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस एक्सऑर गेट के आउटपुट पर, है ना? हाँ सर। क्योंकि ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, तो क्या होगा? जैसे ही पहला क्लॉक आएगा आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक पीरियड, ये जो बिट पोजीशन है, यहाँ वाला डाटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का डाटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का डाटा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का डाटा यहाँ आ जाएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 0 यानी कि F1 जो कनेक्टेड है, F1 कनेक्टेड है F3 और F4 के XOR पर डिपेंड कर रहा है ना? सो हम क्या देख सकते हैं? फॉर द इनिशियल केस व्हेन F3 एंड F4, F3 is 1 and F4 is 0, so what will be the value of F1? 1 सर। 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का जब हम XOR करेंगे, 1 और 0 का XOR करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो in the after the first clock period the value of F1 will become 1। ओके, और ये 0 क्या होगा? ये जो 0 है, ये 0 शिफ्ट होके F2 पर चला जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ F2 पर, ये 1 आ जाएगा F3 पर, और ये 1 आ जाएगा F4 पर। इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है इस वाले स्टेप में? जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हो? अरे क्लास ले रहे हैं भाई, थोड़ी देर में कॉल करो, क्लास ले रहे हैं अभी। अच्छा, थोड़ी देर में कॉल करो, अभी क्लास ले रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Am I audible? Yes, sir. Okay. So whatever I have drawn has been deleted. Zoom में यही प्रॉब्लम है। So okay, so let me draw that portion.
Okay, here I have written F1, F2, F3, and F4. So F4, and we have a clock. So for the initial case, the inputs are, sorry, is it? So the inputs I have written differently. These are 0, 1, 1, 0 initially, 0, 1, 1, 0. So the 0, 1, 1, 0 I have taken according to question. So in the first clock pulse, what will be the output? In the first clock pulse, we have already seen that these F3 and F4, यहाँ पर F3 और F4 का वैल्यू क्या क्या था, 1 0 था. So based upon that we have a 1 at this place. Now this 0 will shift to F2, this 1 will shift to F3, and this 1 will shift to, sorry, 1. Okay, now इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है इस स्टेप में? For the next clock pulse, अभी जो हमारे अभी जो कंटेंट्स है इस रजिस्टर का, वो कंटेंट्स क्या हो गया? 1 0 1 1. अभी ये कंटेंट्स हो गया है ना. अब बेस्ड अपॉन दिस कंटेंट्स, व्हाट विल बी द आउटपुट? दैट इज व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ F1 एट द सेकंड क्लॉक पल्स? 0. Yes, for this one and this one, the output of XOR gate will be 0. So here it will become 0. And what will happen? This one will shift to F2. So here, this one will shift to F2. Is F1 0. Okay, so this 0 will shift to F3, and this one will shift to 1. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था थर्ड क्लॉक पल्स के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा? अभी आने को कंटेंट हमारे पास क्या हो गया इसका? F1, F2, F3 और F4 का 0 1 0 और 1. ओके, ये कंटेंट हो गया. Come on, mute yourself. Maybe some noise is coming from your side. Okay, so now what will be the content of F1 in the third clock pulse? 1 7. So now the contents of this has become 0, and this has become 1, this is 1, and this is 0. Okay, so based upon these contents, the output will be 1. Is it 1? This 0 will shift here, this 1 will shift here, and this 0 will shift here. किन्हीं को कोई डाउट है? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So क्या इस आउटपुट में किसी को डाउट है? No, sir. Okay, so the question was what? Question was that output after 3 clock pulses. Okay, यही था क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर में रजिस्टर के कंटेंट्स दिए हुए थे इनिशियली, एंड द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्स आर what? The contents of register was 0 1 1 0 initially, and you have to find out the output of the third clock pulse. Okay, so let us take one more question. So more or less the question will be same. Okay, so let me draw that. Here also we have a 4-bit shift register. One is the clock, the second one is the
feedback from the in this case, we also have an XOR gate, and we have another XOR gate. Okay, so yes, now here the initial data is 1010. Here is a clock, and here is the serial in input. Okay, so the question is the shift register which is shown here with the initial content as 1010. Okay, अब यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाए कंटिन्यूअसली, तो कितने क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट है वो फिर से 1010 होगा. Are you getting the question? Are you getting the question? What I have asked? Yes, sir. That initially the content of this register is 1010. So after how many clock pulses, the same content will be there. Okay. Yes, sir. So go for it. I am giving you the another question. आपको करना क्या होगा इसमें, जैसे कि हमने इस केस में पहले वाले केस में एक टेबल टाइप का बनाया है, इन द सेम वे यू हैव टू मेक द टेबल. ओके, एंड रीच टू योर आंसर. सो आपको तब तक ये शिफ्टिंग करना होगा जब तक कि दोबारा से ये कंटेंट नहीं आ जाता है. तो कितने क्लॉक पल्स के बाद हमें सेम डेटा मिलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर. सो आफ्टर हाउ मेनी clock pulses, same data will be arrived. Okay, same data मतलब ये 1010 जो इनिशियली था वो सेम डेटा हमें मिले. Okay, now let us take one question which is related with this counter. Okay, तो काउंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप लोगों को ये जानना है कि काउंटर क्या है और काउंटर में जो मोड जनरेट होते हैं वो किस टाइप से काउंट किए जाते हैं. तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर बना लें, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मुझे बताएंगे. Okay, so let me change the color page. Now, what we have, okay, I am drawing the picture. So all of you tell me that what are these, or which type of counter is this? Okay, where's that? Okay, so here we have a counter, and also we have connection which is connected like this. Okay, here we have the clock. Okay, now here we have the outputs Q3, Q2 and Q1. Okay, now this Q3 output is connected with this one, this Q2 output is connected with this one, and here we have the inputs. Okay, so 1, here we have a 1,
and here also we have a 1. Okay, now another connection is that here we have a Q2 bar and here we have a Q4 bar. So यहाँ से so we have one more data output with so which gate is this? And Yes, so this is a NAND gate and it is connected with these inputs. Okay, and the output whatever is got here is connected with this one. Okay, so this is the question. This is the question. So you have to tell us that which type of counter is this? Yes. Anybody? so negative is triggered. counter. Yeah. Okay. So this is a negative. So from this picture, इस picture को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला चीज हम ये बता सकते हैं that which type of clock is or which type of flip flop is there. So it is a negative edge triggered flip flop. ठीक है, पहला चीज आपने कहा, very good. What is the next thing you can see here? So why it is known as negative edge triggered flip flop or why it is told negative edge triggered flip flop? क्या देखकर आपने कहा ये? Bubble, sir. Bubble at clock. Okay. Yes, so sir. clock में जो bubble है, okay, मैंने ये बताया है कि clock में जब bubble होगा तब हम उसे negative edge triggered flip flop कहेंगे. और negative edge triggered flip flop का कहने का मतलब है कि आउटपुट तब चेंज होगा जब क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा. ओके. Okay, so what is the next thing you can observe from this picture? तो 3 फ्लिप फ्लॉप है यानी कि मैक्सिमम आउटपुट 2 to the power n होगा, मतलब 7 तक जाएगा मॉड. 2 to the power n minus 1. यस सर वही. So 2 to the power n minus 1 तक जाता, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो एक NAND से कनेक्टेड है. So मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये 2 to the power so मोड की अगर हम बात करें, so this is mode less than 2 to the power n. यस सर. है ना. ये मोड क्या है? मोड मैंने बताया था कि जैसे कि हमें अगर अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं और कोई फीडबैक अलग से कोई डिकोडर सर्किट नहीं जोड़ते हैं, सो दिस इज अ डिकोडर सर्किट जो हमने अलग से यहाँ पे NAND गेट लगा हुआ है इस क्वेश्चन में. दिस इज नथिंग बट द डिकोडर पार्ट. ओके, सो फॉर दिस केस दिस इज द डिकोडर पार्ट एंड अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता? अगर ये नहीं होता तो ये मोड 2 to the power n काउंटर होता. ओके, तो अगर यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप है तो बेस्ड अपॉन दिस 3 फ्लिप फ्लॉप वी हैव 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3 कितना हो गया? 8. मतलब हमें मोड 8 काउंटर मिलता. मोड 8 काउंटर कब मिलता? जब ये डिकोडर पार्ट यहाँ पर नहीं होता, ये जो NAND लगा है ना, ये नहीं होता तो यहाँ पर मोड 8 जो काउंटर होगा उसमें काउंटिंग कहां से कहां तक होगा? 0 to 7 तक, है ना. इतना काउंटिंग. Yes, बट ये 7 तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक डिकोडर सर्किट लगा है. तो अभी कहाँ तक जाएगा दैट वी हैव टू डिसाइड. तो फर्स्टली मुझे ये बताएंगे कि ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है. ये पिक्चर को देखकर ही क्लियर हो जाता है कि ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है. तो कोई बताएंगे कि ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है? डाउन सर, डाउन काउंटर. ये एक डाउन काउंटर है. ओके, सो हाउ यू हैव टोल्ड दैट? सर क्योंकि उसमें क्यू बार से कनेक्टेड होता है, जब अगर नेगेटिव हो और
क्यू बार से क्लॉक नेक्स्ट में जाए तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। ओके, क्लॉक नेक्स्ट में क्यू बार से कहाँ गया है? सर क्यू से गया है। क्यू से गया है, क्यू बार से तो नहीं गया है। नो सर। तो जब ओके, सो जब क्लॉक क्यू से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्लॉक है वो क्यू से कनेक्टेड है, क्यू बार से कनेक्टेड नहीं है। दिस इज द क्यू बार और ये क्यू है। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट्स होते हैं, क्यू एंड क्यू बार। तो यहाँ पर Q3 बार भी हो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम Q1 बार लिख सकते हैं। ओके, सो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा। ओके, पॉजिटिव होगा सर क्योंकि क्यू से कनेक्टेड है। पॉजिटिव मतलब ये आप डाउन काउंटर नहीं होगा। ओके, मतलब अप काउंटर होगा सर। अब सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे ये कौन सा मोड काउंटर है। ओके, we will see for the next question. All of you rejoin again as the session will get over. Okay, please rejoin again.